Welcome dear students and friends to this channel. So today I will discuss B plus trees, and in previous lectures I discussed B tree. So those who want to learn B tree in detail, so they can refer my previous video. So let's have a look. So first of all there is a question, so that we need to answer. Then we will go to B plus trees. So the question says that find out maximum number of nodes present in a B tree with height 3 and order what 32. So these type of questions are very useful. Okay. So why these type of questions are what important? Because they are also asked in a database management system also. Okay. Because B tree and B plus tree are generally used for indexing purpose. Okay, so there is one topic in database, that is indexing. Okay, so there the question is same. So it is also there in what data structures as well as in database management system, DBMS. So that's why these category of questions are very much important. And so let's have a look. So find out maximum number. So we will do this question in different parts. So firstly we are doing find out maximum number of nodes present in a B tree with height what 3 and order what 32. So let us suppose here I am writing labels, and then after labels what node, and then what keys. Okay, and then children, and then children. Okay, so लेवल मीन्स कितने लेवल हो सकते हैं पॉसिबल. सो पॉसिबल लेवल्स हाइट कितना है 3 है. सो हाइट 3 में कितने लेवल्स होंगे 4 लेवल्स है ना. सो 0 से स्टार्ट करते हैं 0 1 2 and 3. So there are 4 levels overall, 0 1 2 and 3. Okay, now if I talk about what nodes है ना. तो how many nodes are there. तो maximum की बात हो रही है. So maximum nodes. तो this question is for what maximum. Okay, and maximum nodes की बात हो रही है. तो 0th लेवल पे मैक्सिमम कितने नोड हो सकते हैं. मैक्सिमम पॉसिबल नोड इज व्हाट 1. ओके, एक ही नोड होगा, रूट नोड दैट इज कॉल्ड. और उसमें कीज कितनी हो सकती हैं. आपका ऑर्डर कितना है. ऑर्डर आपका 32 है. सो हेयर वन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट ऑर्डर इज 32. order is what. Order is 32. So from this we can find two information. So maximum children. So how many children are there 32. And what maximum keys. So maximum keys are 32 minus 1, that is 31. तो एक नोड है, इसमें मैक्सिमम कीज कितनी हो सकती हैं. सो मैक्सिमम की मस्ट बी व्हाट 31. और मैक्सिमम चिल्ड्रन कितने हो सकते हैं. सो मैक्सिमम चिल्ड्रन इज व्हाट. मैक्सिमम चिल्ड्रन इज 32. गेटिंग माय पॉइंट. सो दिस इज समथिंग लाइक दैट. 0th लेवल है तो यहाँ एक नोड होगा और इसमें कीज कितनी होंगी 1 2 से लेके 31 तक. और इसके चिल्ड्रंस कितने हो सकते हैं. चिल्ड्रंस लाइक 32 चिल्ड्रंस हो सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज द पॉसिबिलिटी. ओके, नाउ कम टू द फर्स्ट लेवल. सो फर्स्ट लेवल पे जब आप जाएंगे तो जो यहाँ नोट्स कितने होंगे जितने वहां चिल्ड्रन होंगे. तो जो 0th लेवल पे चिल्ड्रन बने होंगे वही फर्स्ट लेवल पे क्या हो जाएंगे नोट्स. तो हाउ मेनी नोट्स. सो नोट्स आर 32. एंड व्हाट अबाउट कीज. तो एक नोड में 31 की हो सकती है. तो 32 नोट्स में कितनी होंगी 32 इंटू 31. सो दीज मैनी कीज आर देयर. और चिल्ड्रंस कितने हो सकते हैं फर्दर फिर इसके. तो एक नोड के 32 हो सकते हैं. तो 32 नोड के होंगे 32 मल्टीप्लाइड बाई 32. ओके, और वी कैन राइट इट एज व्हाट 32 स्क्वायर. अदर वे ऑफ राइटिंग 32 स्क्वायर. नाउ कम टू सेकंड. तो सेकंड में क्या होगा. सेकंड में आपके जो नोट्स होंगे वो फर्स्ट पे जितने चिल्ड्रंस होंगे. तो फर्स्ट पे कितने चिल्ड्रन बने हमारे 32 स्क्वायर. तो इतने यहाँ पे नोड होंगे 32 स्क्वायर. ऑब्जर्व वेरी केयरफुल. 32 स्क्वायर नोट्स होंगे और 32 स्क्वायर नोट्स में कितनी कीज हो सकती हैं मल्टीप्लाइड बाय 31, बिकॉज ईच नोड इज हैविंग मैक्सिमम 31 कीज. सो 32 स्क्वायर नोट्स कैन हैव मैक्सिमम व्हाट 32 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 31 कीज.
And what about the number of children possible? So possible children, एक नोड से कितने चिल्ड्रंस हो सकते हैं, मीन्स इतने मैक्सिमम कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं 32, तो इतने में कितने हो जाएगा लाइक 32, ओके, एंड पावर व्हाट 32 पावर 3 लाइक दिस, ओके. सो आई होप दैट दिस यू आर गेटिंग, है ना. नाउ कम टू थर्ड. सो थर्ड लेवल पे कितने नंबर ऑफ नोड्स होंगे, जितने यहाँ पे चिल्ड्रंस होंगे. सो हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर, सो चिल्ड्रंस आर 32 रेज टू पावर 3. सो दीज मेनी चिल्ड्रंस आर देयर एंड कीज कितनी पॉसिबल हो सकती हैं, 32 रेज टू पावर 3 and multiplied by 31. So these many keys are possible, okay, because each node can have 31 keys. So 32 power 3 means 32 into 32 into 33 can have 32 power 3 into 31 keys. And if I talk about number of children, so again number of children means 32 power 3 already there, and each can have 32, so multiplied by, so it is 32 power 4. Okay, now our required answer is what? So required answer is this. So this is our required answer. If we sum up this particular thing, so if we sum up this, so if you add this, okay, so what is the question? Question is maximum number of nodes present in a B tree. So these are the maximum number of nodes. So our answer will be what? 1 plus 32 plus 32 square plus 32 power 3, like this. Okay, so this is what, this is the geometric progression, geometric series. Don't worry, I will show you how we can calculate this in general format. तो यहाँ से कई सारी इंफॉर्मेशंस वी कैन, है ना, एक्सट्रैक्ट, लाइक मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे विद, है ना, इन अ बी ट्री विद हाइट 3 एंड ऑर्डर 32. मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज कितनी हो सकती हैं, तो कीज के केस में हमें इनको ऐड करना पड़ेगा. मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हो सकते हैं, ठीक है, तो इतना हमें ये ऐड करना पड़ेगा. नाउ इफ आई टॉक अबाउट मिनिमम, okay, so if I talk about minimum, so order is given, order is what 32, and minimum के केस में बात करें तो मिनिमम, मिनिमम के केस में दो चीजें हो सकती हैं, मिनिमम चिल्ड्रन हो सकते हैं एंड मिनिमम व्हाट, मिनिमम चिल्ड्रन एज वेल एज मिनिमम कीज. सो मिनिमम चिल्ड्रंस कितने होंगे, मिनिमम चिल्ड्रंस व्हाट 32 डिवाइडेड बाय 2 and सीलिंग फंक्शन ऑफ दैट, सो व्हाट इट विल 16, है ना. और कीज कितनी होंगी, कीज होंगी m by 2 minus 1, so that is 16 by 2 minus 1, so that is what 15. तो 15 पॉसिबल कीज हो सकती हैं किसी भी नोड में, और किसी भी नोड के कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं, 16 चिल्ड्रन हो सकते हैं. So this is the case of minimum. Now observe very carefully. So here I am writing what levels, okay, and here is what nodes, and here what keys, how many keys are possible, observe very carefully. And here is what, here is your children, so how many children are possible, so here is children. Okay, now observe that if I talk about what 0th level, okay, so there are 4 levels because height is what 3, so 0 1 2 and 3. okay, तो 0th level पे minimum number of nodes, so we are talking about what minimum. सो मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स कितने हो सकते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स 1 हो सकता है. और कीज इसमें कितनी हो सकती है, मिनिमम कीज मस्ट बी 15, है ना, कीज मस्ट बी 15. एंड व्हाट अबाउट की इज नॉट 15, की मस्ट बी 1, बिकॉज एक नोड हो सकता है, एक उसमें की हो सकती है. और चिल्ड्रन इसके कितने हो सकते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन 2 होते हैं. मैक्सिमम चिल्ड्रन कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम चिल्ड्रन होंगे 32, बट मिनिमम चिल्ड्रन होंगे 2. रूट नोड की बात कर रहा हूँ, है ना. नाउ आफ्टर दैट कम टू व्हाट फर्स्ट लेवल. तो फर्स्ट लेवल पे जो है चिल्ड्रन होंगे वही क्या होंगे, नोड्स. और जितने नोड्स होंगे उसमें हर एक नोड में की कितनी हो सकती है, मिनिमम. तो आप रूट नोड को अगर छोड़ें, एक्सेप्ट, है ना, एक्सेप्ट रूट नोड, ऑल द नोड्स इन अ बी ट्री कैन हैव व्हाट मिनिमम 15 कीज, है ना. सो ओवरऑल व्हाट 2 into 15 keys. So how many childrens they can have? So they can have what 2 multiplied by 16. Why? Because 2 nodes and each can have minimum 16. So 2 nodes can have what, how many children, 2 into 16. Now at the
second level, how many nodes are there? So nodes are 2 into 16, like this, 2 into 16. And these nodes can have how many keys? 2 into 16 multiplied by 15, like this. And and number of children's for next level, so number of children's are what? 2 into 16, 2 into 16 and multiplied by 16, so 2 into 16 raised to power 2. Okay, because 16 to the 32, 32 children are there, and 32 nodes are there, and each node can have what? 16. So 32 into 16 means, yeah, other way of saying 2 into 16 power 2. Now come to third level. So third level पे क्या होगा? जितने children होंगे previously, children are 2 into 16 raised to power 2, है ना? So इतने children होंगे, इतने nodes होंगे उस पे जो previous level पे children होंगे, or 2 into 16 raised to the power 2 multiplied by 15. These many keys are there. And if I talk about what? Children. So children are how many? 2 into 16 raised to the power 3. Okay, so now what is our required answer? So we are supposed to give what? Minimum number of nodes. So what are those minimum number of nodes? So minimum number of nodes are this. So these are the minimum number of nodes. So this is our required answer. Okay, तो कितना आएगा? This is 1 plus 2 plus 2 into 16 plus what? 2 into 16 what? Square, like this. Okay, so this is the required answer. So if in general, है ना, if I talk in general that maximum number of nodes present in a B tree of order m and height what? h. तो अगर हम ऑब्जर्व करें यहाँ पे, तो यहाँ देखिए प्रीवियसली लाइक दिस, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने आ रहे हैं? नोड हमें ये ऐड ऑन करना पड़ रहा है, तो इस 1 प्लस 32 प्लस 32 है ना पावर 2, तो मीन्स 1, है ना, 1 मीन्स व्हाट? m, है ना हियर. सो इट इज व्हाट? m. So it is somewhat like this, na, that 1 plus 32 plus 32 square plus 32 power 3, and so in similar fashion that m raised to the power 0 plus m raised to power 1 plus m raised to power 2 plus m raised to the power what? 3 plus how height is what? Height is h. So height is 3, so it is m raised to the power h. Okay, so this is what GP, geometric progression. So formula for geometric progression is what? A into 1 minus r raised to the power n. Okay, so if I talk about the formula, so formula for geometric progression, okay, like A, so plus AR plus AR square plus AR 3 plus AR की power n. So the summation formula is what? So the summation S equals to A into r raised to the power n minus 1 upon what? R minus 1. So this is the formula if this m is going to be greater than 1. So this, when this r is what? Greater than 1. So this is the formula in this case. Okay, so now observe here. So it is what? A is what here? A is 1. So 1 into r is what here? M. So m raised to the power n, number of terms. So number of terms are overall h plus 1 and minus 1 or divided by m minus 1. So in general we can say that m raised to the power h plus 1 minus 1 divided by m minus 1. So these many nodes are there. Okay, so these are what? These are number of nodes, maximum number of nodes, okay, in order m B tree with height what?
with height h. Okay, order M B tree with height h. So this is the solution. Now come to the second part, that minimum number of nodes present in a B tree. So what are the minimum number of nodes? So minimum number of nodes, this is the minimum property. So it is 1 plus 2 and plus 2 into 16, like this. Okay, so it is what? It is coming like 1 plus 2 plus 2 into 16 plus 2 into 16 square. Okay, so by using this we can find what, like, so 16 means what? 16 is m by 2 है ना. So it is if you take 2 into m by 2 raised to power 0, it is 1 plus 2 into m raised to the power 2i0 plus 2 into m by 2 raised to power 1 plus 2 into m by 2 raised to power 2 plus, कहाँ तक जाएगा? हाइट अपने केस में 3 था, so it is 2, so means h minus 1, so it is m by 2 2 into m by 2 raised to power h minus 1, so like this. Okay, so this is the case. Now what will happen in this case? That 1 plus, if you take 2 as common, so what will be the answer? So it is m by 2 raised to power 0 plus m by 2 raised to power 1, and so on so forth, and the last term is what? M by 2 raised to power h minus 1, like this. Okay, and again using the same formula for GP. So what will be the formula? So formula you know very well, that a into r raised to the power n minus 1. So 1 plus 2. So here the formula comes a is what? 1 into r raised to the power n. So what is r? M by 2. Okay, so m by 2, or number of terms. So how many number of terms? H, because 0 to h minus 1 is overall h. So number of terms minus 1, or divided by r minus 1. So r is what? M by 2 minus 1. Okay, now if you calculate this, so this will give you what? M by 2 raised to power h minus 1 divided by m minus 2, or divided by 2. So this 2 and this 2 gets cancelled. Okay, so it is m by 2 or otherwise this 2 and this 2 gets cancelled. Not cancelled, I think. M by 2 power h minus 1 or m by 2. So it is m minus 2 divided by 2. So this 2 into 2 is getting 4, not cancelled. So this 2 into 2 will be 4. It is 2, it is 2. So what will happen? 1 plus what? 4 into m by 2 raised to power h minus 1 divided by m minus 2. So this is what? This is the required solution. So what is the solution? Solution means minimum number of nodes in B tree. Order what? Order is small n and height is h. So this is the case. Okay, so I hope that this is clear to you people. So this category of question is very important. Okay, as I already told you that it is very important in 2 subjects. So it is data structure as well as database management system. Now come to actual concept of B trees. So B tree. So first of all, the same definition is applicable here also.
that a BST, okay, is a BST with root node, VST with root node what? Root node having 2 children, having minimum 2 children. Okay, so a BST with root node having minimum 2 children, so it is the case. Okay, and balanced property. So all the nodes, all the leaf nodes, all the leaf nodes are on the same level. So this property is also called as what? Balanced property. Balanced property. Okay, and if M is the order, if M is what? Order of B plus tree. Order of B plus tree. Then same thing. So maximum children is what? M, and what? Maximum keys. Maximum keys are what? M minus 1. And of course, if you talk about minimum, so minimum children is what? Ceiling of M by 2, and minimum keys. So minimum keys equals to what? M by 2. So it is ceiling and minus 1, like this. Okay, and one important property which is different in B plus tree. So the property says that uh, all the nodes must be present in the leaf. All the keys must be present. Okay, must be present in the leaf nodes. So all the keys must be present in the leaf nodes. So इससे क्या होगा कि sequential access is also possible. Sequential access is also possible, है ना, with, along with random access. Along with random access. So don't worry, I will explain, है ना, this property, and rest of the properties are same. So let us है ना, do some problems or create some B tree, B plus tree. So here order is given as what? Order is given as 3. So for this order we can find out what? Maximum children is what? Maximum children must be 3. Okay, and maximum keys, how many keys can accommodate in a node? 2. So firstly let me insert one by one. So insert 10. So 10 will be inserted, no problem. Then next is what? Next is insert what? 20. So this 10 is over. Now next insert 20. So if you insert 20, so 20 is also with the 10, no problem, because 2 keys are allowed. Now as soon you insert 30, now what will happen? So as you insert 30, so the situation is like this: 10, 20 and 30. So what will happen? So at this particular node, at this node, what? Overflow occurs. Overflow. So in case of overflow, what is the solution? So node splitting.
So node splitting. So node splitting is the solution. So now what will be the root node? Root node will be what? 20, and left child is 10. Okay, now in case of B tree, so the right child must be 30, but in case of B plus tree, the 20 is here also as well as, है ना. तो जो रूट नोड पे गया है वो यहाँ लीफ पे भी रहेगा, है ना. तो स्प्लिटिंग में ये, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बी एंड बी प्लस ट्री. दैट्स व्हाई ऑल द नोड्स मस्ट बी एट द लीफ नोड, है ना. नाउ यू विल ऑब्जर्व ऑल द थिंग्स वन बाय वन. So now next is what? Next we are inserting what? 1. So 1 will come what? With 10. So this is the scene right now. So 1 comma 10, and right side is what? Right side is 20 comma 30. Now next element is what? Next element is 2. So now we insert 2. So 2 will come with 1 and 10. तो जैसे ही आपने 2 इंसर्ट किया यहाँ पे, आई एम इंसर्टिंग 2. So 20 is this, and it is 1, 2 and 10. Now it is 1, 2 and 10. Previously it is 1 and 10. Now 1, 2 and 10. It is 20 and 30. So what is happening here? So at this node, है ना, at this node overflow. तो क्या होगा यहाँ पे? नोड स्प्लिट. नोड splitting. So in case of node splitting, है ना, what will happen? 2 will go above, है ना. So 2 will go above. So तो यहाँ क्या होगा कि 2 and 20. So 2 and 20. So here 1, and after that what? 2 and 10. One copy of 2 will be retained here, and here is what? Here is 20 and 30. So I hope that this is clear. Very simple, है ना. Splitting किया तो 2 कहाँ 20 के साथ एडजस्ट होगा, बट 2 की एक कॉपी 10 के साथ भी रहेगी, ठीक है. Now next what we are supposed to insert? Next element is what? Next element is 3. So 3 आप insert करेंगे, so 3 will come. Okay, now again problem है ना. So if you insert 3, now if you insert 3, again I am repeating the same thing. So it is 2, 10, then it is 1, then here 2, 3 and 10 here, and here is what? Here 20 and 30. So again what? यहाँ पे क्या हुआ? Overflow. So at this node what? Overflow. So in case of overflow, what we are supposed to do? Node splitting. So node splitting. So what will happen then? 3 will go what? है ना, 3 जाएगा ऊपर, तो यहाँ क्या बनेगा? So this will be 2, 3 and 10. So 2, 3 and 10, and then left side is 1, and in between it is what? 2. Okay, in between it is 2, and here what? 3 and 10. It is 20, not 10. It is what? 20. That's why it is written wrong. It is 20. Okay, so this is what? 2, 3 and 20. So 2, and here is what? 3 and 10, and then here 20 and 30. So again what? At this node, if you observe carefully, तो यहाँ इस नोड पे क्या हो रहा है? इस नोड में मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज कितनी एडजस्ट हो सकती हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज आर 2, एंड मैक्सिमम चिल्ड्रन आर 3. सो मैक्सिमम कीज 2 हो सकती हैं. तो यहाँ इस नोड पे क्या हुआ? अगेन ओवरफ्लो.
ओवरफ्लो, तो ओवरफ्लो हुआ तो फिर क्या होगा, देन इन केस ऑफ ओवरफ्लो कम हियर, सो अगेन स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग होगा तो आपका 3 अबव रहेगा और 3 का लेफ्ट बना 2 और राइट बनेगा व्हाट 20 and left is again 1 and here right is what 2 and here what left is 310 and here is what 20 and 30. Now it is okay. Now I think you are getting all the things. तो हमें स्प्लिट किया यहाँ पे 3 ऊपर गया। अब आप कहेंगे कॉपी क्यों नहीं रखी, तो कॉपी वाई, बिकॉज ऑलरेडी कॉपी इज अवेलेबल एट द लीफ नोड। नाउ आफ्टर दिस 11, सो 11 में क्या होगा, इंसर्ट 11, तो 11 जब आप इंसर्ट करेंगे तो 11 कहाँ आएगा, 10 के साथ एडजस्ट होगा। सो यहाँ क्या बनेगा 3, देन 2, then right is what 20, then left is what 1 and right is 2 and then here 3 10 and 11 also come here, no? And right side is what 20 and 30. So again see there is a problem, what overflow. So overflow कहाँ हुआ, this particular node, okay, तो यहाँ हुआ overflow, ओवरफ्लो हुआ तो फिर इसका क्या होगा फर्दर, फिर देन इट इज नोड स्प्लिटिंग, नोड स्प्लिटिंग होगा तो 10 का एडजस्ट होगा 20 के साथ, ठीक है। सो 10 विल एडजस्ट विद 20, सो सी व्हाट विल बी द केस, 3, नाउ दिस इज द ट्री, सो 3 it is what 2 and right side it is 10 will come above, so 10 and 20, so it is 10 and 20, okay, and left side is what 1 2, so it is 1 and it is 2 and left of 10 is what, left of 10 is 3 and right side क्या होगा 10 and 11, so right side 10 and 11, so this is the copy है ना 10 and 11 and after 20 so it is 20 and 30, 20 and 30. So I hope up till here you are comfortable, okay. Now come to next, what is 21 and 31, so these two must be inserted, 21 and 31. So observe carefully, now I'm inserting 21, so insert 21, insert 21, 21 कहाँ आएगा आपका, 21 will be inserted over here, so it is 3 2 10 and 20 and this is 1, this is 2 and this is 3 and in between it is 10 11 and right side 21 will be here, right? So it is 20 21 and 30, so again here what, here overflow है ना occurs, so यहाँ overflow हुआ, here overflow, so then what will happen, that in that case what, node splitting, node splitting, तो node splitting होगा तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, then here it is 2 and here is what node split होगा, ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, सो 21 जो है आपका 21 एबव जाएगा, सो 21 गया ऊपर, तो यहाँ क्या आ जाएगा 10 20 एंड 21, 10 20 एंड 21, ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, सो 21 यहाँ आया, तो 21 आया तो लेफ्ट में यहाँ बात करते हैं, सो दिस इज 1 एंड दिस इज 2 and here left is what, left is 3 and in between is 10 and 11, so 10 and 11 और 20 और 21 के बीच में क्या आएगा, so it is what, it is 20 only and after 21 it is what 21 and 30, so again this node है ना, this node is overflow, this node if you observe carefully this node is what, overflow,
तो ओवरफ्लो हुआ तो फिर क्या होगा, स्प्लिट होगा, स्प्लिट होगा सो 20 विल गो अबव, है ना, 20 ऊपर जाएगा तो 3 के साथ 20 एडजस्ट होगा, सो दिस विल बी लाइक दिस. So in this case I will draw it here. Observe very carefully. Okay, I am drawing it here. So after this 20 will move above, तो क्या होगा आपका 3,20 like this. लेफ्ट साइड आपका रहेगा 2 और इन बिटवीन आपका आएगा व्हाट, इट इज 10 और राइट साइड में आपका क्या रहेगा, राइट साइड विल बी 21. 20 कहाँ चला जाएगा, ऊपर जाएगा, 20 एडजस्ट हो जाएगा, देन 10 स्प्लिट हो जाएगा और 21. नाउ लेफ्ट ऑफ 2 इज व्हाट, it is 1 and it is 2 and left of 10 is what, 3 and right of 10 is what, 10 and 11, so it is 10 and 11 and then left of 20 is what, 20 only, left of 21 is 20 and right side is what, right side is 21 and 30. Okay, so after that observe very carefully. Now last node what, insert 31. So as soon you insert 31, observe carefully, insert 31, तो यहाँ 31 कहाँ आएगा, यहाँ पे, तो इस नोड पे क्या हो जाएगा, अगेन अंडरफ्लो, ओवरफ्लो सॉरी, सो अगेन हियर ओवरफ्लो. तो ओवरफ्लो के केस में क्या होगा, नोड स्प्लिट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, नोड स्प्लिटिंग, नोड स्प्लिट. तो यहाँ से 30 कहाँ जाएगा, 30 21 के साथ एडजस्ट होगा. सो ऑब्जर्व केयरफुली, सो इट इज 3 and 20 and left side is what, left side it is 2 and middle part is what, 10 and right side में 21 के साथ क्या एडजस्ट हो जाएगा, 30. so 21, 30 and left is what, 1, right is what, 2, here left is what, 3 and right is 10 and 11, so this part is 10 and 11 and this left of 21 is what, 20 and in between, so in between 21, okay, and right side is what, right side 30 and 31, so it is 30 and 31. So this is our required tree, na? So all the nodes are inserted. Now maximum property is also following. So maximum what, 2 children, maximum what, number of children are 3 and keys are 2. तो किसी भी नोट पे आप चेक कर लीजिए, मैक्सिमम चिल्ड्रन 3 हैं और कीज कितनी है, 2. So this is the required solution. Now do one more question, then it will be comfortable to you. So firstly what we are supposed to, so it is order 3. so order के केस में क्या होगा, आपका मैक्सिमम चिल्ड्रन कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम चिल्ड्रन 3 हो सकते हैं और मैक्सिमम कीज आपकी कितनी हो सकती है, 2. सो ऑब्जर्व केयरफुली, तो 3 कीज हम इंसर्ट करेंगे, 10, 5, 10 एंड 12. सो यहाँ हम इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट 5, 10 एंड 12. तो यहाँ आपने इंसर्ट किया 5, 10 एंड 12. जैसे ही आपने इंसर्ट किया तो इस नोट पे क्या हुआ, इस नोट पे हुआ ओवरफ्लो, ओवरफ्लो. तो फिर फर्दर यहाँ क्या होगा, दिस विल बी नोड स्प्लिटिंग, नोड स्प्लिटिंग. सो नोड स्प्लिटिंग होगा तो नोड स्प्लिटिंग में क्या हो जाएगा, 10 आपका रूट बनेगा, 5 विल बी लेफ्ट एंड राइट साइड इज व्हाट, 10 एंड 12. कॉपी रखना होगा, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, 13. सो 13 जब आप इंसर्ट करेंगे तो 13 वहीं आएगा, तो यहाँ नेक्स्ट आपने 13 इंसर्ट किया, तो 13 कहाँ आएगा, 10, 5 and 13 will come here, so it is 10, 12 and 13 like this. So again here what,
here what again overflow तो यहाँ स्प्लिट होगा तो 12 कहाँ जाएगा ऊपर 10 के साथ सो देन 10 and 12 ओके सो देन यहाँ क्या होगा फाइनली क्या हो रहा है स्प्लिट तो 10 and 12 left is what 5 and in between is what 10 and the right side is what 12 and 13 like this. Now next is what 14 तो 14 जब इंसर्ट करेंगे so 14 के केस में क्या होगा insert 14 so again I'm inserting 14 जब इंसर्ट करेंगे so this is 10 and 12 and left is what 5 and in between is what 10 and the right side is what 12 and 13 और थर्ड नोट क्या इंसर्ट किया यहाँ पे 14 तो जब आपने 14 इंसर्ट किया यहाँ पे सो अगेन हियर व्हाट ओवरफ्लो तो यहाँ क्या होगा स्प्लिट होगा ये तो स्प्लिट जब होगा तो देन इन केस ऑफ स्प्लिटिंग व्हाट विल हैपन कि 13 आपका कहाँ एडजस्ट होगा 13 विल गो है ना टू विद 10 and 12 सो यहाँ क्या हो जाएगा 10 12 and 13 ऑब्जर्व वेरी केयरफुली एंड लेफ्ट साइड में क्या होगा यहाँ हियर इट इज 5 and between 10 and 12 so it is 12 between 10 and 12 between 10 and 12 10 is there so it is 10 12 and 13 के बीच में 12 is there and 13 14 is there right side 13 14 so again if you observe here that overflow is there na? Overflow is there why because there are 3 keys so यहाँ अभी भी क्या है ओवरफ्लो है तो यहाँ स्प्लिट होगा तो फर्दर फिर आगे क्या बना कि 12 will be the root 10 will be left 13 right left of 10 is what 5 left of 10 is 5 and right of 10 is what 10 and left of 13 is what 12 and right of 13 is 13 and 14 okay now insert 1 2 3 4 so 1 और 2 इंसर्ट करेंगे यहाँ पे 1 और 2 तो जब 1 और 2 इंसर्ट करेंगे ऑब्जर्व वेरी केयरफुली सो इट इज 12 and 10 13 so it is 10 and 13 5 10 12 13 14 5 10 12 13 14 तो यहाँ क्या इंसर्ट करना है 1 और 2 इंसर्ट करते हैं ठीक है तो यहाँ I'm going to insert 1 and 2 5 is already there so what I'm inserting 1 and 2 observe very carefully so here insert 1 and 2 तो यहाँ 1 आएगा और 2 आ जाएगा तो यहाँ क्या हुआ दिस नोट्स इज व्हाट ओवरफ्लो हुआ तो इसमें 2 कहाँ एडजस्ट होगा 10 के साथ so now what will be the resulting tree so it is 12 यहाँ आ जाएगा आपका 2 and 10 और 2 का लेफ्ट होगा आपका 1 और इन बिटवीन होगा आपका क्या 2 and 5 so it is 2 and 5 and after 10 it is what 10 and right side में क्या होगा it is 13 and left is 12 and right is 13 and 14 now 2 more keys are there 3 and 4 so 3 and 4 so let's insert 3 and 4 तो 3 आपका कहाँ एडजस्ट होगा 3 and 4 दोनों यही होंगे तो I am inserting 3 and 4 insert 3 and 4 observe very carefully what will happen 12 तो 12 के बाद यहाँ
पहले यहाँ 3 इंसर्ट करते हैं, फिर 4, एक एक करके करते हैं, ठीक है। सो इन दिस केस इट इज 2 and 10, एंड यहाँ कितना है 13, लेफ्ट इज व्हाट 1, between is what 2 and some value, and it is what 2 some value, and this is 5. Okay, and right side is what 10, and left is 12, and right is 13 and 14, 13 and 14. तो यहाँ क्या insert किया, inserted element is what 3, so 3 यहाँ insert हुआ, तो 3 insert हुआ, तो यहाँ क्या हुआ overflow। तो overflow के केस में क्या होगा, so node splitting will be there, so now node splitting, तो यहाँ क्या होगा node splitting। तो नोड स्प्लिट होगा तो 3 कहाँ जाएगा, 3 2 के साथ एडजस्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो द फाइनल रिजल्ट विल बी 12। आफ्टर दिस वी आर मूविंग हियर, ओके, सो इट इज 12, लेट मी टेक हियर 12, देन लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा 2 3 10, सो इट इज 2 3 and 10, and right side is what 13, left of 2 is what 1, and in between it is 2, and this is what 3 and 5, and after 10 there is a 10, and left of 13 is 12, and this is 13 and 14. okay, now if you observe carefully तो again overflow is there है ना, तो यहाँ overflow है यहाँ पे already, so this is what overflow। तो फिर यहाँ 3 कहाँ चला जाएगा, 3 will go upside है ना, तो यहाँ पे splitting हो जाएगी। so ये किस तरीके से होगा, it is 12, it is 2 है ना, यहाँ आपका 3 ऊपर आ जाएगा, तो it is 3 and 12, so this is 3 and 12, 3 and 12, okay, again and again drawing very, but anyhow the concept is very easy। so between what 10, so it is 10, and right side is what 13, left of 2 is 1, right is 2, okay, so left of this 3 10 is what 3 and 5, 3 and 5, and right of 10 is what 10, and left is 12, and right is what 13 and 14, okay। now last value is what 4, so insert 4, 4 कहाँ adjust होगा, 4 will come with 3 and 5, so यहाँ again what will happen, I am inserting what 4, observe carefully, insert 4, insert 4, तो 4 जब आप इंसर्ट करेंगे तो 4 कहाँ एडजस्ट होगा, 4 will come here, 4 will come here, तो again what here it is overflow, तो overflow केस में क्या होगा, 4 will go with 10, okay। so the final solution for this is what 3 and 12 like this, and left is what, left is 2, and middle is what 4 and 10, so here 4 and 10, and right is what, right is 13, okay, and left of 2 is 1, and right is 2, and left is what 3, and middle में copy आएगी 4 की, so 4 and 5, so 4 and 5, and right is what 10, and left of 13 is 12, and right is 13 and 14, like this।
ओके, सो नाउ इट इज ना करेक्ट, कंफर्टेबल। तो यहाँ क्या है, यहाँ बी प्लस ट्री में आप रैंडम एक्सेस के साथ साथ सीक्वेंशियल एक्सेस भी कर सकते हैं। तो सीक्वेंशियल एक्सेस अगर मैं यहाँ शो करूँ आपसे, तो सारे के सारे एलिमेंट्स कहाँ हैं, देखिए जितने भी एलिमेंट्स थे ओवरऑल, तो वो सारे के सारे लीफ नोड्स में कीज वो अवेलेबल हैं। तो सीक्वेंशियल एक्सेस इज आल्सो पॉसिबल। सो हाउ वी कैन व्हाट, let me change it like this. So sequential access is also possible like this. Okay, there is a connection. So this is what, this is all the keys, all keys are on leaf nodes. So for this, what sequential access possible, sequential access possible. Okay, so this is about B plus tree, and this is written over here that what in B plus trees, it is not B tree, it is B tree. Okay, so in B trees only random access is possible, whereas in the case of B plus trees both random access as well as what sequential access is possible. Okay, so this is the advantage of B plus tree. So now we are at the end of this lecture, and we discussed in this lecture B plus trees, specifically how to create a B tree, means insertion into a B tree, and also saw one basic stuff related to B tree, that is minimum number of nodes and maximum number of nodes in a particular B tree if the order is given and the height is given. So we generalize the concept also. So now if you are getting all this and liking the content, then like, subscribe and share this channel with your learning community so that other will also get benefited by the same. So happy learning to all of you and stay safe.